So this is the question number 21 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, four functions have been given to you and it has been asked out of these given four options, which one is not a function or method in CSV module in Python. So in order to answer this question, first of all, we need to be aware what is a CSV module in Python, what are the reading and writing functions in CSV module, and then we're going to look at them one by one. So in Python, CSV module provides function as well as classes for reading, writing and manipulation of data in CSV format. So functions की अगर मैं बात करूं तो basically for reading we have reader function as well as अगर मैं writing की बात करूं तो we have a writer function. Okay. अगर मैं classes की बात करूं तो we have dictionary reader and अगर मैं बात करूं writing की तो we have dictionary writer. Okay. So let's take a look at them one by one. तो फर्स्ट वन है अगर मुझे रीडिंग फंक्शन की बात करूं CSV फाइल के अंदर तो इन ऑर्डर टू रीड ए फाइल क्या करते हैं आप जनरली आप फाइल को ओपन करते हो ठीक है तो लेट्स से व्हाट यू हैव डन CSV फाइल एक ऑब्जेक्ट ले लिया आपने जिससे कि अगर आपने फाइल ओपन कर ली फाइल का नाम लेट्स से abc.csv okay and you try to open in the read mode or new file parameter you can give as a just whatever you feel to give one like that okay so this object is allow us to read file with the help of reader function. Now this जो reader function से जो आपको object मिला है this object will allow you to data read row by row. Okay. So ये क्या कर रहा है आपका जो reading function है it gives you reader object जैसे कि मैंने अभी बताया it gives you reader object जो क्या करेगा लाइन को प्रोसेस करेगा जो CSV फाइल से और क्या करेगा ईच रो को रीड करेगा एंड क्या देगा आपको आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट जो आपका आउटपुट मिलेगा CSV अंडरस्कोर रीडर ऑब्जेक्ट की वजह से see CSV reader object will not give you the list of string it will allow you to extract data in the form of list of strings. Okay. Now coming to the writing function in CSV file similar to the reader function writer function क्या देगा क्या करता है आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इट विल कन्वर्ट इनटू द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ओके तो वट एवर ऑब्जेक्ट यू प्रोवाइड आपने चाहे लिस्ट प्रोवाइड कराओ जो टपल पर कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट आपने जो प्रोवाइड कराया इट विल कन्वर्ट ऑटोमेटिकली इनटू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो लेट्स से देन इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हो आप इट विल अलाउ यू टू हेल्प टू राइट द डाटा इनटू द CSV फाइल. जिस तरह से रीडर ऑब्जेक्ट विल नॉट गिव यू द डाटा सिमिलरली राइटर ऑब्जेक्ट डज नॉट इटसेल्फ राइट द डाटा. इन ऑर्डर टू राइट द डाटा इनटू द CSV फाइल जो CSV ऑब्जेक्ट है आपका जो राइटर ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा आपको विद द हेल्प ऑफ राइटर राइट रो एंड राइट रोज फंक्शन you will be able to write the data into this particular file. Okay. So ये जो functions है हमारे write row and write rows जैसे नाम से ही पता चल रहा है write row is for writing a single row and write row is for writing multiple rows in a CSV file. These functions are part of the writer object. Okay. So in nutshell अगर मैं बात करूं तो अगर मैं CSV की तो we have reader function ठीक है जो क्या करेगा आपको एक मेमोरी लोकेशन देगा उस मेमोरी लोकेशन क्या करना है आपको डाटा रीड करना है डाटा रीड किस में होगा आपका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में ओके. सिमिलरली वी हैव राइटर फंक्शन जो क्या काम कर रहा है आपका इट गिव्स यू द राइटर ऑब्जेक्ट विच विद द हेल्प ऑफ टू फंक्शन राइट रो एंड राइट रोज you will be able to put your data into the CSV file. Okay. दोनों ही केस में क्या होगा आपको इटरेबल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा ठीक है. नाउ वट एवर डाटा यू प्रोवाइड इन द राइटर फंक्शन जो राइटर ऑब्जेक्ट है आपका व्हाट विल इट डू इट विल राइट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. Since it write the data in the form of list of string that's why we only got the data in the form of list of strings. Now let's see an example. Then it will clear us what is the reading and writing function in CSV file. So let's take a look at this one. So first line what we have done we have imported the CSV module and in CSV module after CSV module what we have done we have opened a file with the object CSV underscore f. Then with the help of writer function
what we have created, a writer object has been created, which is named as CSV underscore writer. Now with the help of writer object and writerow function, we are trying to write 3 rows in a CSV file. Now you need to see here, first in the first case what we have provided, tuple. In second case we have provided list, and in third case we have provided a string. So in the three cases what we have provided different data types, and along with that all the data types are iterable in nature. Okay, so इससे क्या होगा, जब when you run this program a CSV file has been created, तो इस टाइप की आपकी एक CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी. इसके अंदर क्या होगा, हर रो में हर कॉलम में आपका एक डाटा आ गया. नाउ when we try to read this data using a in the same program, when we try to read this data, so what we need to do, we need to create a reader object. So with the help of reader function, we need to create a reader object. Once we create a reader object, what we need to do, we need to fetch the data from with the help of reader object. So what will be the output of this program? This output of this program will be the list of strings. Now you can observe here is, in first case data has been given as list of tuple of data, but what we are getting list. In this case we are given as list of data, we are getting a list of string. Similarly राइटो के अंदर भी क्या करा आपने लास्ट केस में, you given a string but आपको मिला क्या, list of string. So whatever in iterable format you provide the data in the case of writing a file, but when you are reading the data, you will always get data in the form of list of strings. So coming back to our question, now let's see the option. So read function is part of the text file. It will allow you to read the data with the help of complete data of the file with the help of file object. But reader and writer and write row, all these functions are the part of the CSV module. So the correct answer would be option number A, and the reason is this is the part of the text file. This function, read function, is a part of the .txt file. Okay, I hope it conveys the idea what we are trying to give here regarding the CSV module in Python. I hope you learned something new today. If you have any doubt, feel free to ask in the comment box. That's it for the day then.